Senator Patterson. Thank you, President. My question is to the Minister for Foreign Affairs, Senator Wong. Minister, at Senate estimates hearings on the 12th of February, during an exchange on the subject of so-called ISIS brides, you said, and I quote, "Australian citizens have various entitlements which are not discretionary under law and no government is able to make them discretionary," end quote. Is it true that as Foreign Minister you have no discretion under current law to refuse to issue a passport under any circumstances? Thank you, Senator Patterson. Minister Wong. I have made clear already in this place, it is possible for the Foreign Minister to refuse or cancel a passport on security grounds. She said that. If this will be the fifth time, if a competent authority requests it. ASIO. You are not a competent authority. Senator Wong. Newsflash. What I have said is that ASIO and other competent authorities have not made such a request. Thank you, Minister. Senator Patterson, first supplementary. Thank you, President. Minister, Section 9 of the Australian Passports Act states that a minister may issue emergency documents. Furthermore, the entitlement to a passport outlined in Section 7 is qualified in Section 8, which requires, quote, "the minister to be satisfied of a person's citizenship and identity." Can the minister confirm if the passports or travel documents issued to the 34 so-called ISIS brides and their families were authorised under Section 9? Thank you, Senator Patterson. Minister, sorry. Thank you. It remains a legal entitlement for Australian citizens to be issued an Australian passport if they meet eligibility requirements. So that is the position. In relation to, I'm not in a position, as you know, I was in a position, as you know, Senator, I'm not in a position, you may have asked questions about these at estimates, nor was the department, to answer specific questions about specific individuals, and I think the department went through why that is the case. Order. But what I would say is that... Senator Ruston, come to order. Minister Wong, do you wish to continue? Does Senator Ruston want me to respond, or would she like to? I know that she hasn't got much... Thank you, Minister. The time for answering has now expired. Senator Patterson, second supplementary. President. Minister, Section 14 of the Passport Act states, and I quote, "If a competent authority suspects on reasonable grounds that if an Australian travel document were issued to a person, the person would be likely to engage in conduct that might prejudice the security of Australia or a foreign country, the person should be refused an Australian travel document in order to prevent the person from engaging in that conduct." In your 4 years as Foreign Minister, how many passports have you refused or cancelled under Section 14? Thank you, Senator Patterson. Minister Wong. That is the section that I have been referencing now in numerous questions, and no such request was made in relation to the group that you are referencing. In relation to other matters, I act as Foreign Minister under that section on the basis of any advice provided by a competent authority, which in general is ASIO and AFP. Senator, I am not in a position, you should not ask me. Minister Wong, please resume your seat. Senator Patterson. On direct relevance, President, I've asked the Minister how many passports were refused or cancelled under this section of the Act. The Minister is being relevant to your question, Senator Patterson. Minister Wong. I mean, the extent to which the irresponsible, those opposite are irresponsible, that you would actually ask questions about the advice of security agencies. I act on the advice of security agencies. I act on the advice of security agencies, and if you want... You have been on PJSIS, you have been on the committee, Senator. If you want a confidential briefing on classified matters, I will provide it. Did you hear what I said? If you want a confidential briefing on classified matters, I will provide it. Has expired. Order. Order. That was extremely loud and disrespectful. पेनी वोंग शायद ये समझ रही थी कि ये एक रूटीन सवाल होगा। एक और हीरिंग
थोड़ा सा लीगल जार्गन, थोड़ा सा सेफ जवाब और बात खत्म। लेकिन किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि सेनेटर पैटरसन इस बार सीधा जवाब लेने आया है। और जो आप अब देखने वाले हैं, ये सिर्फ एक पार्लियामेंट्री एक्सचेंज नहीं है। यह वो मोमेंट है जहां एक सिंपल सवाल पूरी नैरेटिव को हिला देता है। सब कुछ एक सीधे सवाल से स्टार्ट होता है, क्या आपके पास पावर है पासपोर्ट डिनाई करने की या नहीं? सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। पेनी वोंग पहले कहती हैं कि हाँ, मिनिस्टर पासपोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। फिर टूरेंट कंडीशन ऐड होती है, सिर्फ तब जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहे। और यहीं पैटरसन ने पकड़ लिया गप, क्योंकि असल सवाल यह नहीं था कि प्रोसेस क्या है, असल सवाल यह था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल मोमेंट, सेक्शन 9, सेक्शन 7, सेक्शन 8। लॉ क्लियरली कह रहा है कि मिनिस्टर को सेटिस्फाई होना होता है आइडेंटिटी और सिटीजनशिप से। तो फिर सवाल सीधा है, आईसिस ब्राइड्स को दिए गए पासपोर्ट्स किस अथॉरिटी के अंडर अप्रूव हुए? और यहाँ पेनी वोंग रुक जाती हैं। डायरेक्ट जवाब देने के बजाय वो जनरल स्टेटमेंट्स पे चली जाती हैं, लीगल एंटाइटलमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन नोटिस करो, सवाल स्पेसिफिक था, जवाब जेनेरिक है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर आता है सबसे डैमेजिंग पार्ट, सेक्शन 14 का जिक्र होता है, जहां क्लियर लिखा है कि अगर सिक्योरिटी रिस्क हो, पासपोर्ट रिफ्यूज किया जा सकता है। अब पैटरसन पूछता है वो सवाल जो सब सुनना चाहते थे, 4 सालों में कितने पासपोर्ट्स रिफ्यूज या कैंसिल किए गए? और यहां कोई नंबर नहीं, कोई क्लियर आंसर नहीं, सिर्फ एक लाइन रिपीट होती है, आई एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। और ये वही मोमेंट है जहां पूरी सिचुएशन फ्लिप हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ लीगल डिबेट नहीं रही, ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल बन चुका है। क्या मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है या सिर्फ एडवाइस फॉलो कर रहा है? और अगर एडवाइस नहीं आई तो क्या कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया? पैटरसन बार बार एक ही चीज पुश करता है, नंबर्स, फैक्ट्स, क्लैरिटी। और हर दफा जवाब या तो डिफ्लेक्ट होता है या शिफ्ट हो जाता है। फिर एंड में जब प्रेशर पीक पे होता है, टोन चेंज हो जाता है। सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें इरिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। और ये वही मोमेंट है जहां डिबेट कंट्रोल से निकाल जाती है, क्योंकि जब फैक्ट्स की जगह फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो समझ लो कि सवाल सीधा दिल पे लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो यहां समझनी चाहिए वो ये है, नो सच रिक्वेस्ट वॉज मेड। मतलब अगर रिक्वेस्ट नहीं आई तो एक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन फिर सवाल ये है, सिस्टम काम कर रहा है या सिर्फ वेट कर रहा है? और अगर कोई रिस्क था तो किसने इंश्योर किया कि वो हैंडल हो? ये सिर्फ एक हियरिंग नहीं थी, ये एक क्लियर रिमाइंडर था कि जब जवाब सिंपल हो और फिर भी ना दिया जाए तो प्रॉब्लम सवाल में नहीं होती, प्रॉब्लम कहीं और होती है। और ये सिर्फ शुरुआत है।